Today I am going to explain question number 10 of exercise 4.3 of quadratic equation. Here the question is, an express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of express train is 11 km more than that of passenger train, find the average speed of two trains. Here question says an express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore. एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम टाइम लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में मैसूर और बैंगलोर के बीच. इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर मोर दैन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन. एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर आर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से. सो ऑब्वियसली एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम टाइम लेगी पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में. So find the average speed of two trains. Here we need to find the speed of two trains. So let us say the speed of the passenger train is x km per hour. Here question is saying that if the average speed of express train is 11 km or more than that of passenger train. Express train की speed 11 km और ज़्यादा है passenger train की speed से. So speed of express train is equals to x plus 11 ऐड कर देंगे. So x plus 11 km per hour. दोनों ट्रेन्स कितना डिस्टेंस कवर करती है 132. तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 132 किलोमीटर. वी नो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम है. सो डिस्टेंस इज 132, स्पीड इज x. सो 132 अपॉन x. टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर इज 132 अपॉन x. इसको TP ले लेंगे कि एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. Distance is same here. So 132, speed is x plus 11. 132 upon x plus 11. Time taken by the express train to travel 132 km is 132 upon x plus 11. इसको TE ले लेंगे. So here train increases the speed 11 km per hour. So obviously it takes 1 hour less to cover the same distance. एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम टाइम लगा है पैसेंजर ट्रेन से सेम डिस्टेंस कवर करने में. दैट इज़ 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा कम टाइम लगा है. सो डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन एंड एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 1 आवर. पैसेंजर ट्रेन का टाइम और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम दोनों का डिफरेंस कितना है 1 hour. So I can write TP minus TE is equals to 1. TP is 132 upon x minus, write as it is, minus TE is 132 upon x plus 11. So 132 upon x plus 11 is equals to 1. 132 upon x minus 132 upon x plus 11 is equals to 1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम LCM ले लेंगे. Here LCM is x into x plus 11. x will get cancelled. 132 into x plus 11 minus, write as it is, minus x plus 11 will get cancelled. 132 into x is 132x is equals to 1. 132 into x is 132x. 132 into 11 is plus 1452 minus 132x upon x into x is x square. X into 11 is plus 11x is equals to 1. By cross multiplication, we get 132x plus 1452 minus 132x is equals to x square plus 11x into 1 is x square plus 11x. So plus 132x minus 132x will get cancelled. X square plus 11x, shift this 1452 to the right hand side. So it will become minus 1452 is equals to 0. So we got a required quadratic equation. So here we'll be using splitting middle term method. We have to split the middle term into two parts in terms of sum और difference. हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में 11 आए और मल्टीप्लाई करने में 1452. विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 1452. 2 7 are 14, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 1 are 3, 11 are 121. So 2 2s are 4, 4 into 11 is
44, 2 to the 4, 4 11s are 44, 3 11s are 33. So 44 minus 33 is 11. So 44 into minus 33 is 1452. So x square plus 11x can be written as 44x minus 33x minus 1452 is equals to 0. Take x common, so x into remaining term is x plus 44, that is x into x is x square, x into 44 is 44x. Take minus 33 common, minus 33 into remaining term is x plus 44, that is minus 33 into x is minus 33x. Minus 33 into 44 is minus 1452. Minus into plus is minus is equals to 0. So x plus 44 is common. X plus 44 into x minus 33 is equals to 0. X plus 44 is equals to 0. X minus 33 is equal to 0. Equated to 0, we get x is equals to minus 44. X is equals to 33. We know speed of the train cannot be negative. So therefore the speed of the passenger train is x. So that is 33 km per hour. Then the speed of the express train is x plus 11, that is 33 plus 11. 33 plus 11 is 44 km per hour.